Hello friends, welcome back to our eighth part of clause by clause analysis of tax audit report form 3CD। तो चलिए समझते हैं आज के पार्ट में क्लॉज 27 से क्लॉज 30 को एनालाइज करेंगे। तो क्लॉज 27 का क्लॉज ए, CENVAT credit. This clause requires the auditor to report the amount of CENVAT credit, excise duty credit, that the assessee has availed, claimed during the year, utilized, outstanding balance at beginning and at the end of the year. CCR rules started in 2002, replacing mode VAT, and later updated in 2004. Businesses can claim credit on input services, capital goods, and use it to pay excise duty. ऑडिटर को क्या चेक करना है? RG23 रजिस्टर, स्टैट्यूटरी एक्साइज एंड सेंट्रल रिकॉर्ड्स, ensure balances in books matching with excise record, report opening balance, credit availed, credit utilized, closing balance separately, verify how CENVAT credit has been treated in the profit and loss account. If the business follows an exclusive method of accounting, excise duty on raw material is recorded in a separate CENVAT account instead of the purchase cost, so it does not directly affect the P&L account. The details under this clause should match the information reported in clause 14B of Form 3CD. After GST implementation, excise duty is now applicable only on 6 products. कौन से? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस, टोबैको। तो अब इन 6 प्रोडक्ट्स के लिए ही ये रिपोर्टिंग बची है। टैक्स ऑडिटर शुड कंसिडर मेंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन हिज वर्किंग पेपर फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ई फाइलिंग यूटिलिटी। तो क्या? ओपनिंग बैलेंस, CENVAT availed, CENVAT utilized, क्लोजिंग बैलेंस। क्लॉज 27B, प्रायर पीरियड इनकम एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट करना होता है। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो असेसी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। इट रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंस ऑफ अर्लियर years which are recorded in the current year's P&L account. अंडर कैश सिस्टम दिस इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि वहां पर हर एक आइटम जो भी जिस ईयर में एक्चुअली में पे होता है या रिसीव होता है उसी में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है? इफ द एक्सपेंस इनकम रिलेट्स टू अर्लियर ईयर बट एक्चुअली crystallizes in the current year, it is not treated as a prior period item. Only if it is due to errors or omissions of earlier years as per AS5 or Ind AS 8, it will be treated as prior period item. ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके रिगार्डिंग? वेरीफाई वेदर एन आइटम शोन एज करंट ईयर्स एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू अर्लियर ईयर्स। If yes, disclose it as a prior period item. If there is a difference of opinion, the auditor should mention his observation in the audit report. Clause 28, ये एप्लीकेबल नहीं है असेसमेंट ईयर 22-23 से। क्या था ये क्लॉज? ये क्लॉज बात करता था शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर आपको मिले हैं बिना कुछ पे करे, या फिर एफएमवी से कम पे किया है, 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है एफएमवी और जो आपने पेमेंट किया है। तो अब ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। क्लॉज 29, the auditor has to report whether the assessee has received any share application money or share premium above the FMV of shares during the year. If yes, full details must be furnished. तो क्या कहता है सेक्शन 56(2)(7)(b)? ये 56(2)(7)(b) की रिपोर्टिंग है। तो पहले 56(2)(7)(b) समझ लेते हैं। दिस अप्लाइज टू क्लोजली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली हेल्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिसमें जो जिनके शेयर्स एक तरीके से बाहर बहुत लोगों के पास नहीं है, जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह सकते हैं। इफ सच अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर एफएमवी, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव एफएमवी इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड टैक्स्ड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब कंपनी के शेयर्स बाहर लिस्टेड ही नहीं है, बाहर किसी के पास है ही नहीं, तो आप घर में ही एक तरीके से 30-40 शेयर होल्डर्स, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप ज्यादा पैसे पर अगर शेयर बेच रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेंशन है। तो उसको जितना आप ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं उसको एज एफएमवी ट्रीट, उसको एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? money received by a venture capital undertaking from a venture capital company fund specified fund, money received by a company from certain notified person, मनी रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, लेकिन ये एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 23-24 तक के लिए। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 इवन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट कैन अट्रैक्ट टैक्स अंडर दिस सेक्शन।
इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो यानी कि एक्सेप्शन क्या है? इफ अ कंपनी इज exempted from this rule because of a notification but later failed to meet the condition of that notification, then the excess share premium received will be taxable in the year of default and be treated as misreporting of income, और उसके ऊपर हायर पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी। एफएमवी कैसे डिटरमाइन करेंगे? एफएमवी ऑफ शेयर्स कैन बी डिटरमाइंड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। रूल 11 यूए, नेट असेट्स वैल्यू और अदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड। दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तीसरा फॉर इक्विटी शेयर्स वैल्यूएशन बाय एन अकाउंटेंट मैनेजमेंट, फॉर प्रेफरेंस शेयर्स अदर शेयर्स वैल्यूएशन बाय मर्चेंट बैंकर्स अकाउंटेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग intangibles like goodwill, patent, trademark, reported by an expert. Auditor must obtain and review the valuation report as audit evidence. Auditor का क्या रोल है? Check whether the company is closely held company, verify all the shares issued during the year from books of accounts and documents, keep a copy of valuation reports in the audit working paper, report details in the prescribed format if shares are issued at a value higher than FMV. और क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है? किसको शेयर्स इश्यू हुए हैं, पैन उसका अगर अवेलेबल है, whether the company is a company in which public is substantially interested, number of shares issued, consideration received, FMV, किस फेयर वैल्यू पे किस फेस वैल्यू पे इश्यू हुए हैं और कितना अमाउंट टैक्सेबल है। अगर नहीं है तो टैक्सेबल बताना होगा क्यों नहीं है। क्लॉज 29A, रिपोर्टिंग ऑफ फोरफीटेड एडवांसेस। तो आपको कोई एडवांस मिला और आपने उसको फोरफीट कर लिया, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई होगी उस वजह से, तो वो एडवांस जो आप फोरफीट करेंगे वो रिपोर्ट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर ऐसा है तो आपको क्या पता करना है? नेचर ऑफ इनकम क्या है, अमाउंट ऑफ इनकम क्या है, वेदर, क्या कहता है सेक्शन 56(2)(9), if someone receives any advance money during negotiations for transfer of a capital asset and the deal does not go through and that advance is forfeited, that the reported advance is to be treated as income from other sources। और उसको रिपोर्टिंग कैसे करनी है? ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट नेचर ऑफ इनकम क्या है, फॉरफीचर ऑफ एडवांस है नेचर ऑफ इनकम, साथ ही साथ एक्चुअल अमाउंट कितना है। और ये क्लॉज ऑल्सो इंश्योर करता है दैट द एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन फेल्ड कैपिटल एसेट्स डील इज रिपोर्टेड एंड टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भाई यहाँ पर पर्सनल कैपिटल एसेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये जो पैसा फोरफीट किया है वो पर्सनल कैपिटल एसेट से रिलेट करता है तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर अभी तक एडवांस को फोरफीट नहीं किया है तो भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं है। इफ द एडवांस इज जस्ट लाइंग पेंडिंग, टाइम बार्ड और आउटस्टैंडिंग, इज नॉट टैक्सेबल until it is actually forfeited by the assessee. The auditor should confirm with the assessee whether the amount has really been forfeited. Business related advance है, if the advance was taken for sale of stock in trade and later forfeited, it will be taxable as business income and not under income from other sources. Hence no reporting under clause 29A, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। यूनिलैटरल राइट बैक। यूनिलैटरल राइट बैक का मतलब क्या है? एक बंदे ने अपने आप से राइट बैक कर दिया। इफ द असेसर सिंपली राइट बैक्स द एडवांसेस इन बुक्स, इट मे नॉट automatically means forfeiture, but since it indicates possible forfeiture, auditors should disclose this with a note. forfeiture का मतलब क्या है? लॉस और गिविंग अप मनी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Obtain a written representation from the assessee about any advances received for transfer of capital assets and whether they were forfeited in that year. Check if any amount was written back and whether it indicates forfeiture. Report only in the year in which forfeiture actually happens. Clause 29B, reporting under section 56 to 10, tax auditor has to report whether any income needs to be included under the head income from other sources as per section 56 to 10. If yes, उसकी डिटेल देनी है। नो,
तो नो बताना है। अगर यस है तो ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट नेचर ऑफ इनकम, कैश, गिफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स, अमाउंट बताना है। Clause 29B requires reporting of gifts or undervalued purchases of money, immovable property, or certain specified assets that are taxable as income from other sources. Section 56(2)(10) में क्या covered है? This section says that if a person receives money, immovable property, certain specified property without adequate consideration, that is free or at a very low price, then it will be treated as income. The following receipts are taxable if conditions are met. Money, if total money received without consideration in a year is more than 50,000, whole amount becomes taxable. Immovable property, without consideration, if stamp duty value is greater than 50,000, taxable at a stamp duty value for inadequate consideration. If stamp duty value is higher than purchase price by more than 50,000 or 10% consideration, the difference is taxable. Special points: if date of agreement and registration are different, stamp duty value and agreement date can be considered, but only if payment was made via banking channel before the agreement. If assessee disputes stamp duty value, AO may refer it to the valuation officer under section 50C. Other property includes shares, security, jewelry, bullion, painting, sculptures, drawings, archaeological collections, or virtual digital assets. Without consideration, if total fair market value is greater than 50,000, whole FMV is taxable. With inadequate consideration, if FMV exceeds purchase price by more than 50,000, the difference is taxable. एक्सेप्शन क्या है? लॉ प्रोवाइड्स मेनी एक्सेप्शन, जैसे कि गिफ्ट मिला है रिलेटिव से या मैरिज पे या अंडर अ विल और बाय इनहेरिटेंस इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर, लोकल अथॉरिटीज से अप्रूव्ड ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल अंडर सेक्शन 1023C, फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A, 12AA, 12AB, सर्टेन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन जो कि कवर्ड है सेक्शन 47 में, अमाउंट रिसीव फॉर कोविड-19 मेडिकल एक्सपेंसेस और कोविड-19 डेथ रिलीफ सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? टर्म प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, वर्क ऑफ आर्ट, वर्चुअल डिजिटल असेट्स। अदर असेट्स लाइक स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट कवर्ड। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो रूल 11(u)(11(a) के बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? गेट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम असेसी अबाउट सच रिसीट्स, वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एनी सच आइटम, डिसाइड वेदर आंसर टू क्लॉज 29BA should be yes or no. If yes, nature of income and amount should be reported. क्लॉज 30 में क्या है? हुंडी लोन्स लिए हैं आपने, रीपेमेंट किया है। इफ एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी, हुंडी क्या होता है? एक पेपर होता था, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके बेसिस पर पैसा उधार लिया जाता था या दिया जाता था। और एनी रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज मेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एन अकाउंट पेड चेक, यानी कि कैश में ट्रांजेक्शन किया है, डिटेल्स मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज। Report both borrowings and repayment. Auditor must show the details of hundi borrowings and repayment if they are not done through an account paid check. सीबीडीटी के सर्कुलर हैं इसके लिए दो। Verification by the auditor should collect a complete list of all Hundi loans borrowed and repaid other than by way of account pay check. These should be cross-checked with books of accounts. If clear evidence is not available, auditor may rely on management certificate or representation. Mode of payment restriction. Section 69D does not allow electronic payments like NEFT, RTGS, UPI. Only account pay check is acceptable. This is different from 40A3(3)(a), where certain electronic modes are permitted. Clause 23 ensures that all Hundi borrowings and payments are not made by account paid check are disclosed, since such transactions may be reported as income under Section 69D. तो क्या information maintain करनी है other than working papers? Name of the person, किससे पैसा लिया है या दिया है, PAN, address, amount, date of borrowing, amount including interest, amount repaid, date of repayment. थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जो कि पार्ट 8 था हमारे क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस का फॉर्म 3CD के। तो हमने अब क्लॉज 30 तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्लॉज 30A से शुरू करेंगे। क्लॉज 44 तक कवर करने हैं हमें। पूरा टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CD हम एनालाइज करेंगे अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।